In previous lessons, we have discussed that what is meant by coordinate transformations, and we have also discussed some special kind of transformations like translation, rotation, scaling, etc. In this lecture, we will discuss about the application of coordinate transformations, that how these coordinate transformations are applied in different fields. Transformations can represent geometric operations which are caused by movement or action. Okay? As well as changes of coordinates which are caused by changes of interpretation. So we have discussed two types of coordinate transformations. Two type of transformations. One is the coordinate transformations and other you can say only the transformations. ठीक है? First lesson में आपने जो coordinate transformation के पढ़ा था वो coordinate transformation से कि आप एक coordinate system से दूसरे coordinate system में जा रहे हैं तो आपके पास equations हैं तो आप coordinates किसी भी पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में शिफ्ट कर सकते हैं. सिमिलरली सेकेंड में जब हमने स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी थी उनमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज नहीं कर रहे थे लेकिन आप एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं अंडर ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन दोनों की अपनी एप्लीकेशंस हैं. Here we will discuss both of them. Many common spatial transformations including translations, rotations and scaling are represented by matrix operations and we have discussed all of them. Here we will discuss some applications of transformations. तो यहाँ हम जो मेनली एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे वो है कैमरा इमेज प्रोसेसिंग में कैसे आपकी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ होती हैं, रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ होती हैं एंड ऑल्सो इन कंप्यूटर ग्राफिक्स. सो फर्स्ट वन इज़ द कैमरा इमेज प्रोसेसिंग. See at this flow diagram कि आपके पास कैमरा इमेज प्रोसेसिंग के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं 4 टाइप के. ठीक है, द फर्स्ट वन इज द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड वन इज द कैमरा कोऑर्डिनेट्स एंड थर्ड वन इज फिल्म कोऑर्डिनेट्स एंड पिक्सल कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, वी विल डिस्कस देम. तो फर्स्ट आपके पास है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम. वर्ल्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम क्या होता है? जो रियल वर्ल्ड आपके पास पिक्चर, जो रियल वर्ल्ड आपके पास सीन है जिसको आपने कैप्चर करना है कैमरा के अंदर, तो ये 3 डायमेंशनल होते हैं कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, दीज आर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स फिक्स्ड इन द वर्ल्ड सेव विद रिस्पेक्ट टू वन कॉर्नर ऑफ द रूम. ठीक है, तो ये अगर आपके पास ये रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ, ये आप देखें और इस तरह से ये आपके पास ट्रांसफॉर्म हो रहा है कैमरा कोऑर्डिनेट्स में अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन. एंड व्हाट आर द कैमरा कोऑर्डिनेट फ्रेम? दीज आर 3D, 3-dimensional coordinates fixed in the camera. And how this coordinate system is set? The origin of the camera coordinates is at the center of the projection of the camera. You can see over here the Z-axis is taken to be the optical axis of the camera as this. ठीक है, विथ पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वो पॉजिटिव Z डायरेक्शन में आए. तो इस तरह से ये कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट. तो थर्ड है आपके पास इमेज कोऑर्डिनेट फ्रेम कि आपके पास एक रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम है, उससे आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगे कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में और फिर कैमरा के अंदर ही ये वाले कोऑर्डिनेट्स आपके पास इमेज कोऑर्डिनेट्स में एंड देन पिक्सल कोऑर्डिनेट्स में चले जाएंगे. ठीक है, तो आपको इमेज शो. तो let's see how the coordinate transformations are used here. सबसे पहले आपके पास थे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तो वहां से वो जितने भी पॉइंट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगे कैमरा कोऑर्डिनेट्स में. ठीक है, दीज आर द कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो यहाँ ट्रांसफॉर्म होंगे, उसके बाद कैमरा के अंदर ये कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे 2-dimensional इमेज कोऑर्डिनेट. यू कैन सी ओवर हियर. तो यहाँ आपके पास डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस यूज हो रही हैं 3D to 3D and 3D to 2D also. ठीक है, next one is the robotics. How coordinate transformations are used in robotics? For the purpose of controlling a robot, it is important to know the kinematics where transformations between the coordinate frames are performed. ठीक है, अब रोबोट को कंट्रोल करने के लिए आपने उसको मूव करना है तो उसके अंदर डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स अटैच हैं जिनको आप जहाँ ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई बेसिकली हो रही होती है टू मूव द रोबोट. These frames are attached to different robot lengths of the robot, and vectors and matrices are used in robotics to represent 2-dimensional and 3-dimensional positions, directions, rigid body motion and coordinate transformations. So यहाँ आपके पास different transformations use हो रही होती हैं to move the robots. ठीक है, to move the robots, to translate it, to rotate it.
So next one is the computer graphics. Computer graphics deals with generating images with the aid of computers. Today, computer graphics is a core technology in digital photography, film, video games, cell phones, and computer displays, and many specialized applications. तो कंप्यूटर ग्राफिक आपके पास बेसिकली क्या है, आप कंप्यूटर के थ्रू इमेजेस बना रहे हैं, तो वी हैव टू ट्रांसलेट दैट इमेजेस, वी हैव टू रिसाइज दैट इमेजेस, वी हैव टू मूव दैट, वी हैव टू चेंज देयर ओरिएंटेशन एज वेल। तो हम वहाँ पर वो जो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी थी वो यहाँ यूज टू प्रोड्यूस द मोशन, टू मूव दैट images on the computer screen. A transformation is used to change the object's position, साइज, ओरिएंटेशन एंड शेप्स, ठीक है। तो पोजीशन चेंज करने के लिए हम ट्रांसलेशन यूज़ करेंगे, उसका साइज चेंज करने के लिए स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होती है, एंड ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए रोटेशन, एंड लाइकवाइज इसकी शेप चेंज करने के लिए शेयर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होती है, ठीक है। तो इसी तरह सिंपल, इन अ सिंपल सेंस, अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज when you zoom in or zoom out an image on your computer or your mobile phone, ठीक है। So these are all the practical applications of coordinate transformation.